हेलो दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बीईपीएस, मतलब बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। BEPS refers to the phenomenon where companies invest in a host country via shell companies situated in tax havens to reduce their tax liability. India has ratified the multilateral convention to implement tax-related measures to prevent BEPS। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है कि इंडिया ने जो मल्टीलेटरल कन्वेंशन है टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स बेहतरीन तरीके से रेटिफाई किया हुआ है। नाउ द मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट द ट्रीटी इज एन आउटकम ऑफ द वर्ल्ड बैंक बीईपीएस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रिफर्स टू फिनोमिनन वेयर कंपनीज इन्वेस्ट। देयर इज नो नीड कि भैया आपको बीईपीएस अगर बेसिकली इफ यू वांट टू shift the profit, if you want to कहीं ना कहीं escape from the tax liability, there is no need of invest। पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है? फॉल्स है। सही जवाब होगा इस सवाल का बी, दैट इज ओनली टू। ठीक है, ये OECD का प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इट्स नॉट अ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट। ठीक है, सो basically it's an outcome of the OECD G20 project to tackle BEPS, that is tax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profit to low or no tax locations where there is little or no economic activity, resulting in little or no tax being paid. So the companies, they need not invest via shell companies to be accused of BEPS। सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं उसी का एक फिनोमिना सुपर कंप्यूटिंग। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स: क्वांटम मैकेनिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, जेनोमिक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ड्रग डिस्कवरी। तो मेरे ख्याल से पांचों की पांचों सही हैं। ओके, अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, सुपर कंप्यूटिंग की बात करते हैं, करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो सुपर कंप्यूटर्स दे आर यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज of computationally intensive tasks in various fields, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। दो स्टेटमेंट्स है अगले सवाल में। इन इंडिया जनरली द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट वेयर एज इन फ्यू केसेस कैन बी इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो बिल्कुल सही बात है ये। इन द पुट्टास्वामी जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल, देखो पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना कि फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो स्टेट आपको प्रोवाइड करे और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल 17। ठीक है, मतलब अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपका वो राइट वायलेट कर रहा है तो भी आपके पास क्या है, उसको लेके आप कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलेगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। सही जवाब होगा इस सवाल का। चलिए तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे हैं। जनरली टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय द यूएस फेडरल रिजर्व लीड्स टू एफपीआई सेल ऑफ इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। लोअर वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट द डॉलर keeps import bills lower for India. Lower value of Indian rupee against the dollar is beneficial for travelers and students studying abroad. Lower value of Indian rupee, देखिए बेनिफिशियल की अगर हम बात करते हैं ना, क्या होता है कि अगर आप यहां से अमेरिका जा रहे हो, ठीक है, $1 जो है 70 रुपए और $1 जो है 80 रुपए। ठीक है, तो अगर आप अमेरिका गए तो 80 रुपए के केस में आपको 80 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 के, पहले आपको 70 देने पड़ते हैं। मतलब एज ए इंडियन आपको 10 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो रुपए की कीमत जब कम होती है तो जो ट्रैवल करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज्यादा रुपीज निकालने पड़ते हैं डॉलर खरीदने के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि भाई बेनिफिशियल, दैट इज नॉट ट्रू। और इंपोर्ट बिल भी लोअर नहीं रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ओनली वन होगा। FPIs which own around 19.5% of the market capitalization, they have pulled out rupees 42,000 crore in June 2022 so far, taking the total outflows to rupees 2,60,000 crore।
Okay, so FPI sell-off जो है, it is being attributed to the tightening of monetary policy by the US Federal Reserve, which has been on a rate hiking spree to control inflation. और एनालिस्ट का ये कहना है that a lower rupee against the dollar keep import bills higher, pushes inflation even higher. Okay, so higher inflation, it is detrimental to the overall market. The alternative dispute resolution mechanism of mediation is mentioned. Code of Civil Procedure 1908, Commercial Codes Act 2015, Consumer Protection Act 2019, all of the above. तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तो जो है वो सारों में है, ठीक है. इन इंडिया दो मेडिएशन फाइंड्स लेजिटिमेसी इन सम स्पेसिफिक लॉज, जैसे कि ये सारे, देयर इज नो स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन एज. Consider the following statements regarding development finance institutions, that is DFI. Development finance institutions, they provide risk capital for economic development projects on a non-commercial basis. Industrial Development Bank of India was set up as India's first DFI before independence. During the pre-liberalized era, India had DFIs that were primarily engaged in development of industry in the country. तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है. और अगर हम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डीएफआई की बात करें, ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट बैंक, तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करता है नॉन कमर्शियल बेसिस में, दैट इज ट्रू. साथ ही साथ ड्यूरिंग द प्री लिबरलाइज्ड एरा, इंडिया हैड डीएफआई जो कि प्राइमरली डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री में एंगेज थे, एब्सोल्युटली ट्रू है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें आईडीबीआई की अगर हम बात करें, आईडीबीआई 1964 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. ये पहला डीएफआई जो था वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सेटअप से हुआ था. सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा. आंसर इसका होगा दोस्तों बी, दैट इज 1 एंड, ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. सो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ तीन स्टेटमेंट्स हैं. It is the ability of a microbe to resist the effects of medication. That is true. They can spread between people, animals, including from food of animal origin and from person to person. It does not occur naturally. So naturally, it can also occur. ऐसा नहीं है कि it cannot occur. Okay, because they are also found in environment as well. That is water, air, soil. तो यहाँ पे correct answer होगा इसका 1 and 2. That is Sahel region. Sometimes seen in the news, कहाँ located? ठीक है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, सेंट्रल यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका. ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है साहेल रीजन की. साहेल रीजन जो है वो अफ्रीका में, ठीक है. सो आंसर इज डी, दैट इज नॉर्दर्न अफ्रीका. So it is the eco-climatic and biogeographic realm of transition in Africa between Sahara to the north, Sudanian savanna to the south. Having a semi-arid climate, it stretches across the south central latitudes of northern Africa between the Atlantic Ocean and the Red Sea. ठीक है. तो कंटिन्यू करेंगे. The Electoral College for the Indian presidential election comprises of elected members of राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, लोकसभा के आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के आते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के असेंबलीज के भी. चारों सही. सही जवाब होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दी. सॉरी, जम्मू कश्मीर के जो हैं अभी लॉ पास नहीं हुआ है, तो जम्मू कश्मीर वाले नहीं होंगे, रियली सॉरी. सो चौथा हट गया, ठीक है. जम्मू कश्मीर के जो एमएलएज हैं वो पहले पार्ट लेते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है. और क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो एमएलएज हैं अब उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का हिस्सा बनाने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, सो अभी तक वो नहीं हुआ है. तो चौथा गलत है, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1, 2 एंड. चलिए, इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ही रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स. ईच कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वुड रिक्वायर 50 मेंबर्स of the electoral college to propose their name and another 50 to second it. At present, the total value of votes of MPs and MLAs is based on 2011 census population figures. Among all the states, Goa has the lowest value of each vote of MP. ठीक है. सो अगर हम देखें टोटल वैल्यू जो है वो इतनी है, याद करने की नीड नहीं है.
ओके, इट इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस पॉपुलेशन। 50 की बात जो है, 50 प्रपोज के लिए, 50 सेकेंड करने के लिए, तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगर हम राज्यों में देखें, सिक्किम हैज द लोएस्ट वैल्यू, नॉट गोवा। ठीक है, सही जवाब होगा इसका ओनली वन, दैट इज consider the following statements regarding International Liquid Mirror Telescope, that is ILMT. International Liquid Mirror Telescope has been set up in India. The telescope will make sky surveys possible and obtain images that can help observe stars, galaxies, supernova explosions, and record the presence of space debris or meteorites. The telescope uses a large pool of mercury placed in a vessel which is spun so fast that it helps in focusing the reflected light. So you have three statements here regarding International Liquid Mirror Telescope. Okay, that is ILMT. तो अगर हम ILMT के बारे में देखें, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। 4-meter ILMT saw the first light recently gazing out from its vantage on Devasthal, a hill in Uttarakhand. Okay, so it is staring at the sky overhead. It will make sky surveys possible and obtain images that can help observe transient phenomena such as supernova and record the presence of space debris or meteorites. Okay, so it has been built by a collaboration of scientists from Canada, Belgium, India, and it is located at an altitude of 2450 meters in Nainital district. Consider the following statements regarding minimum support price, that is MSP. So generally the MSP rates are announced before the beginning of the sowing season. Among all the crops for which MSP are provided, the maximum rate is provided for paddy. An increase in the MSP is approved by the CCEA chaired by PM of India. So minimum support price, ठीक है, CCEA की अगर हम बात करें, approved the increase for all 14 kharif crops and announcing the MSP hike before the sowing of kharif crops will give farmers an indication about the price which they would get and help them in deciding which crops to grow. ठीक है, सो सही जवाब होगा इसका। दो स्टेटमेंट्स हैं, फायर सर्विसेज इन इंडिया कम अंडर द 12th शेड्यूल। At present, there are no legal provision that provides fire prevention, life safety in relation to fire and fire protection. तो 12th शेड्यूल तो गाइस एंटी डिफेक्शन लॉ, सॉरी 10th शेड्यूल है। 11th क्या है, पंचायत, और 12th है आपका म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, सो 12th शेड्यूल में फायर सर्विसेज आते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 243W. Okay, so the performance of functions listed in the 12th schedule comes under the domain of municipalities, and at present there is no such law, that is absolutely. So अगर हम present की बात करें, fire prevention, fire fighting services ये जो है, they are organized by the concerned states, UTs and urban local bodies. ठीक है, also there is this part 4 of the National Building Code of India 2016 जिसका टाइटल है Fire and Life Safety. It covers the requirements for fire prevention, life safety in relation to fire and fire protection of buildings. Consider the following statements regarding INSA-COG. INSA-COG was established as a joint initiative of Union Ministry of Health and WHO. It was established to expand the whole genome sequencing of SARS-CoV-2 across India with the aim of understanding how the virus spread and evolves. तो second statement तो यहाँ पे सही है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है हेल्थ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंडर आता है विद CSIR एंड ICMR। ठीक है, तो पीएम मोदी ने रिसेंटली अनाउंस किया था दैट द इंडियन SARS-CoV-2 genomics consortium would be extended to India's neighboring countries. ठीक है, which of the following could be the reasons for the failure of infrastructure projects by the public sector enterprise? Cost overrun, ineffective governance, lack of interministerial या फिर departmental coordination, optimum input-output ratio is rarely observed, leading to overcapitalization. ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। प्राइमरी रीजन अगर हम देखें तो पता ही है आप, ठीक है, 2 साल का प्रोजेक्ट 10 साल लगता है, करप्शन एंड ऑल, तो ये सारी चीजें बताने की नीड है नहीं। इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो भी सही नहीं है। ठीक है, देन देयर इज लैक ऑफ इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, देयर इज पुअर डिसीजन मेकिंग, इनइफेक्टिव गवर्नेंस, excessive government control, etc. Consider the following statements regarding urban heat island. An urban heat island is experienced when certain areas within a city experience high heat load than surrounding areas on the same day.
It is a local and temporary phenomenon. Construction of high-rise buildings rather than two-story building helps in reducing the urban heat island. Okay, so urban heat island is a local and temporary phenomenon experienced when certain pockets within a city experience higher heat load than surrounding or neighbor areas on the same day. ठीक है? On the contrary, urban areas lack sufficient green cover or gardens and are often developed with high-rise buildings. ठीक है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा. Consider the following statements regarding 1967 Outer Space Treaty. The treaty forbids countries from deploying nuclear weapons in outer space. According to the treaty, no nation may claim sovereignty of outer space or any celestial body. The treaty prohibits the launching of ballistic missiles through space. तो 1967 का ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्च को प्रोहिबिट नहीं करता. ठीक है, which could be armed with weapon of mass destruction as well. So the treaty repeatedly emphasizes that space is to be used for peaceful purposes. Okay, so among the outer space treaty's main points are that it prohibits the placing of nuclear weapons in space. It also limits the use of moon and all other celestial bodies to peaceful purposes. ठीक है, so सही जवाब होगा इसका. तो ये आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है. मैं मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और एमसीक्यू